Hello everyone, welcome to Beat the Street. Today we have the management of Kwick Forensic Solutions Limited, which is a Chennai-based integrated forensic science and digital investigation and evidence management solutions. The company has an R&D lab and a forensic lab in Chennai, which is being supported by Ministry of Science and Technology and the Directorate of Forensic Science and TIFAC. The company has DSIR recognized R&D capabilities, and the company is coming with an IPO. So we have the management. So I welcome the management of Kwick Forensic Solutions. So we have Mr. Shamir Shah, who is the managing director of the company, Mr. Ashok Hinduja, who is the CEO of the company, and Mr. Vishal Jain, who is the CFO of the company. So I begin with the Mr. Shamir Shahji. So welcome, sir. Thank you for giving us the opportunity and giving us your time to brief about your company. So माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे, आपकी कंपनी का जर्नी क्या रहा है, हाउ यू केम इनटू दिस बिजनेस. आई थिंक यू हैव डन अ वेरी स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग एन software development firm. You came into specialized forensic solutions, which is a very niche industry. So please sir, if you can tell us about it. Yes. So basically, we started Quick Soft as a software development company as a specialized in 3D interactive simulation software. Okay, so basically, the software that time, 2005, it was a very high tech, and very few people were in this industry. As we executed some good projects, our name was recommended to the Ministry of Home Affairs to develop one software which is basically the scientific methods of investigation, and for the investigation officer who goes to the crime scene. So this software was actually very difficult to develop those days in 2005. Now we have many good 3D engines and rendering engines. We can now develop it very easily, but those days in 2007-8 it was a little difficult. So we got an opportunity to speak to the government of India, Ministry of Home Affairs. We developed some proof of concept, presented, and it was approved by them. In 2 years, say 2008 to 2009 late or 2010 early, we completed this project. And when we started marketing this software simulator to the training academies, that is police training colleges, police training school, police training academies, we came across that there is a good requirement for some kind of scientific kits, which were basically virtual in this our software. So then we did little bit of intense research. Where is the gap? We found the gap is that there are no good quality scientific kit suppliers in the country, and so we little deep dived and took some good decisions of tying up with a company from US who are the pioneers even today in supply of scientific kits, named as Sirchi. So their fingerprint powder, fingerprint brushes, then narcotic detection kit and explosive detection kit. All these kits we brought in India and started marketing. So as we went in 2014-15, we established ourselves as supplier for the scientific kits. 2015, we came with a good concept of mobile forensic van. Why we came with this concept? Because India has almost about 800 districts across the country, and the forensic science labs were only available in 70 cities. So there is a gap of almost 700 and odd forensic, which the government definitely could not build because of the infrastructure cost, maintenance cost. So we proposed a mobile forensic van which goes to the crime scene to, along with the officers, to collect evidences, package, bring it to the police station, or all that. And as the POC, again proof of concept, we were asked to supply 2 vehicles to Goa state that time in 2015, which we supplied, and it was accepted. So by the time it revolved, it became 2019, 20, like that. That mobile forensic van now today is a very huge requirement. Almost about 2,000 vehicles is required in the country. And at the same time, we also introduced few unique handheld devices. Of course, that
that time it was imported. This is the scientific kits. So all this, and the below, if you can see 4D fingerprinting and these are the handheld devices. So as we went, we also understood that there is a gap for laboratory equipment. So we went into laboratory equipment in the year 2025. We also diversified into cyber, that is digital forensics also. So yeah, next question. ओके सो सर आप थोड़ा सिंस आपने आपकी जर्नी बताई यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू फॉरेंसिक्स एंड उसमें आप फर्दर डाइवर्सिफाई करते गए डिजिटल फॉरेंसिक्स आपने स्टार्ट किया आई थिंक यू आर नाउ गोइंग इनटू ई फॉरेंसिक्स तो आप थोड़ा ई फॉरेंसिक्स के बारे में बताइए कि वो एग्जैक्टली exactly क्या चीज़ है व्हाट एग्जैक्टली हाउ यू आर डिजिटाइजिंग दिस होल बिजनेस ऑफ बीइंग फॉरेंसिक बीइंग डन तो वो थोड़ा आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए Yes. So if you look at our logo, Quick Forensics के नीचे लिखा रहेगा from crime scene to court. Okay. So अभी as per the new laws, the BNSS law, उसमें एक mandate है कि भाई any crime which is having a conviction of 7+ years, मतलब छोटे petty crimes को छोड़ देते हैं. Crimes like rape, poxo, narcotics, murder. Okay, all these cases are called as heinous crimes, which has a conviction rate of 7 years plus. So, usme, as per the new law, it has been very clearly defined that right from the IO, investigation officer, reaches a crime scene, or a forensic expert reaches a crime scene, what are the do's and the don'ts? So, in this e-forensic, हमने different apps बनाए हैं, right from chain of custody of evidences से लेके विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग. कल उठ के कोई विटनेस अपना स्टेटमेंट देता है क्राइम सीन पे, कल उठ के वो चेंज ना हो जाए, तो उसके लिए अभी we have developed app which is recorded and the data directly goes to the state server, पुलिस के सर्वर में चले जाएगा. So there is no chance of any kind of a manipulation or deletion or editing the witness statement and things like that. So same thing goes, पुलिस स्टेशन में जाके सस्पेक्ट को पूछते हैं, इंटरोगेशन करते हैं. So this is also completely digitized. So like that, we have about 6 different apps, applications in a single टैब. एंड्रॉइड का टैब है, ये 8 इंच का रगड़ टैब है. इसके अंदर सब हम इसको लोड करके देते हैं. So now this will become a mandatory in every mobile van plus police stations and the forensic science labs. So this is a brief about the e-forensics. और सर आपने जो आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज के बारे में बताया ये सब आपने इन हाउस डेवलप किए हुए हैं या फिर हम कोई आउटसाइड वेंडर से खरीदते हैं या इंपोर्ट करते हैं हाउ इट इज लाइक दैट बीइंग डन Yes, up to 2020 2021 तक हम सब इंपोर्ट ही करते थे. बट ओके द कोविड जो हमारा 4-6 महीने का लॉकडाउन था, we opened up our minds that we should actually go into manufacturing. Plus, the government of India was also emphasizing too much on Make in India products. So we put all this 6 months of COVID lockdown, going to the office along with our R&D team also, and we decided that all this can be re-engineered. हमने कोई नया innovation नहीं किया है, but जो imported है उसको हमने re-engineering किया, and we were quite successful in doing this with almost 13 to 14 products like this. So this is the and these are all totally Indian one now. ओके सर अभी हम थोड़ा हमारे कस्टमर बेस के बारे में बात करते हैं आई थिंक वी हैव डन अ वेरी स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका जो पूरा गवर्नमेंट बिजनेस डिपेंडेंट था नाउ 45% ऑफ योर बिजनेस इज नाउ कमिंग फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज सो प्लीज एक्सप्लेन सर ये सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट ईयर में आया है ये इसके पीछे क्या मेजर चेंज हुआ है हमारे बिजनेस में या हमारे पूरी इंडस्ट्री में किस किस तरह की नई प्राइवेट एंटिटीज से हमें डिमांड आ रही है तो व्हाट इज लाइक दैट हाँ नहीं देखिए अभी हम जो करते हैं बिजनेस इट इज प्योरली गवर्नमेंट बिजनेस एंड यूजर इज पुलिस डिपार्टमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और फिंगरप्रिंट ब्यूरो सब इज ओनली दीज है. अभी हमने क्या किया था वी some orders last year especially
came to us through private parties. Okay, end user उनका भी end user is only the government. तो उनका कुछ local contact था 2-3 स्टेट में, so we routed the order through them, पर सारा supply everything हम लोग नहीं किया था. So that ये जो मैट्रिक्स है अभी showing 55 and 45, it is giving a little skewed picture. This is not the correct thing actually. हमारा supply ultimate user is the government only. और ऑर्डर्स हमको कैसे मिलते हैं? ऑल थ्रू जेम पोर्टल, ई पोर्टल ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स. ऑर्डर्स कम थ्रू दैट. एग्जीक्यूशन इज डन बाय अस ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्राइवेट पार्टीज. ऑर्डर सिर्फ उनके नाम में था, तो हमारे बुक्स में वी हैव टू शो दैट वी हैव सप्लाइड टू प्राइवेट पार्टी. ये रेशियो अभी चेंज हो जाएगा कमिंग ईयर में. It will become, we are targeting for about 80-20, 80% direct orders and 20% through private. ओके ओके. और सर एक बार हम थोड़ा वापस पीछे चलें कि हमारा जो बिजनेस सेगमेंट वाइज जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, सो हमारा जो अभी मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस है वो एविडेंस सॉल्यूशंस एंड फॉरेंसिक साइंस से आता है. सो जैसे जैसे हमने साइबर एंड डिजिटल फॉरेंसिक स्टार्ट किया है, और मतलब द मिक्स, आज का जो हमारा मिक्स है वो गोइंग फॉरवर्ड कैसा होगा? सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. पहले मैं बोलूंगा सर आपको हमारे क्या वर्टिकल्स है. ये जो लिस्ट है इधर, फर्स्ट वर्टिकल इज फॉरेंसिक साइंस एंड फिजिकल एविडेंस, दूसरा है साइबर एंड डिजिटल, थर्ड है डीएनए एंड फॉरेंसिक, फोर्थ है मोबाइल फॉरेंसिक वैन, एंड फिफ्थ इज सर्विसेज रेंटल एंड एएमसी. और इसका ब्रेकअप भी है, कितना परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हैज कम इन द, दिस इज फॉर 2026 का फिगर्स, 31 मार्च 2026 का. और क्या क्या इस वर्टिकल में मैं एक ब्रीफ देता हूं आपको. फॉरेंसिक साइंस एंड फिजिकल एविडेंसेस जो आइटम्स और टूल्स, इक्विपमेंट, हैंडल डिवाइसेस जो यूज होते हैं क्राइम सीन में, वो इस वर्टिकल में आते हैं. दिस इज इंक्लूडिंग आवर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो अभी हमने लास्ट 1.5-2 years में प्रमोट करते हैं. दूसरा वर्टिकल है साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक्स. दिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और ये 33% ऑफ आवर टर्नओवर इससे आता है. और ये भी हम इस लास्ट 2.5 years ओनली वी आर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्टिकल पे. थर्ड जो है डीएनए फॉरेंसिक, इसमें जो डीएनए प्रोफाइलिंग का जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डेटाबेस होते हैं, ये इस वर्टिकल में आता है. एंड गवर्नमेंट इस वर्टिकल पे और एम्फेसिस दे रही है गोइंग फॉरवर्ड. फोर्थ है जो मोबाइल फॉरेंसिक वैन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्टिकल है हमारे लिए. इसमें एक ब्रीफ देता हूँ आपको. एक हम गाड़ी बनाते हैं, मोबाइल गाड़ी, जिसमें एक मिनी लेबोरेटरी भी बनाते हैं पीछे, सब सीट सब निकाल के लेबोरेटरी, जिसमें जो भी किट्स चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, डिजिटल किट्स चाहिए, सब कुछ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैन. तो सिर्फ वो फोन आया पुलिस स्टेशन पे, गाड़ी लेके सीधा क्राइम सीन पे चले जाते हैं. तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल है. और फिफ्थ है हमारा सर्विसेज का रेंटल एंड एएमसी का, विच इज अराउंड 9%. ओके सर, गॉट इट. आई थिंक हम थोड़ा अब इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं. आई थिंक वी हैव गेट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी टेलर्ड मेड सॉल्यूशंस हैं, उनका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज भी प्रूवन है. then the quality and certifications you have is of very high cadre. And आपका जो relationship रहा है being a trusted partner to these kind of enforcement agencies and government agencies, so you have a very niche market leadership overall. And I think आप थोड़ा हमें आपकी इंडस्ट्री के बारे में बताइए, बिकॉज इट्स अ completely different industry for the markets. तो क्या सारी चीज़ें हो रही है, मतलब ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, क्या टाइम है, थोड़ा उसके बारे में बताइए. ठीक है सर. ये जैसे आपने बोला अभी सर, ये एक नीश सेगमेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. वेरी वेरी फ्यू प्लेयर्स आर देयर, बट देयर इज नो प्लेयर लाइक अस. जो सब सेगमेंट जो फॉरेंसिक के 13 डिविजन्स होते हैं, उसमें हम ऑल 13 डिविजन्स में मौजूद है. वी प्रोवाइड प्रोडक्ट्स फॉर ऑल दीज डिविजन्स. दूसरे लोग भी है, पर वो एक डिविजन डीएनए में होंगे या साइबर में होंगे, और किट्स का सप्लाई होएगा. पर हमारा
solution जो हम देते हैं, we give for all the entire verticals. Now अभी government is giving a lot of funds going forward. ये इधर जो list है आपके screen पे, उन्होंने 30,000 करोड़ अलॉट किया है इस सेगमेंट को, इस फॉरेंसिक ग्रोथ को ओवर द नेक्स्ट 5 years. ओके, और ये विल बी फॉर नॉट ओनली फॉरेंसिक, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होएगा इसमें, पर उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि फॉरेंसिक पे बहुत एम्फेसिस डालेंगे. ओके, कैसे एम्फेसिस डालने वाले हैं? दे आर सेटिंग अप न्यू फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज. ये सब ग्रोथ बताएगा आपको कि ये इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है और द गवर्नमेंट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू दिस. सर, एक आपके बिजनेस में जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी एक R&D लैब है, फॉरेंसिक लैब, विच इज इन चेन्नई. आई थिंक दैट इज फॉर द सिमुलेटर सर्विसेज. मतलब आप गवर्नमेंट को आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को शोकेस करने के लिए वो आपने लैब बनाई है, करेक्ट? नहीं सर, सॉरी, वो करेक्ट असेसमेंट नहीं है आपका. वो R&D लैब जो हमने सेटअप किया है, इट इज बेसिकली जो हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे पहले, उसका कैसे हम मेक इन इंडिया कर सकते हैं. तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का हमने री इंजीनियरिंग करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, वी हैव आइडेंटिफाइड क्या क्या कंपोनेंट्स है, और वो गॉट दोस कंपोनेंट्स डेवलप, वी हैव डेवलप्ड इट ourselves, इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर ऑल्सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर. ये जो प्रोडक्ट्स हम भेज रहे हैं अभी, इसमें सॉफ्टवेयर प्लेज अ वेरी वाइटल. ओके सर, आई थिंक हम अब फाइनेंशियल पार्ट पे मूव करते हैं. तो विशाल जी, इफ यू कैन टेक अस थ्रू योर फाइनेंशियल स्नैपशॉट कि हमारे रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो हुए हैं, EBITDA एंड पैट. सो इफ यू कैन जस्ट टेल अस द रीजंस बिहाइंड इट कि I think we have Yes, grown by almost 3x in last 3 years. correct. So, see, as you can see, we have consistently grown. Our top line has grown from 30 crores to 105 crores, which represents around 85% of our CAGR roughly. And this growth is not because of one particular segment. आप right hand side में देखेंगे segment wise revenue bifurcation में, every segment has equally contributed. अभी जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, फॉरेंसिक साइंस एंड फिजिकल एविडेंस सॉल्यूशन, that has grown around 3.5x. Cyber and digital forensics has grown around 5x. And DNA forensics एक नया emerging concept है. And as per PNS law, rape cases and POXO cases के लिए the convicts जो है उनका DNA प्रोफाइल करना मैंडेटरी है. And DNA test reports भी आप going forward देखेंगे. It is mandatory to get the DNA test reports. So this DNA forensics will see further growth in the upcoming cycles. And mobile CSI vehicle आप देखोगे कि वो भी grow हुआ है. Services stagnant रहेंगे, and going forward also it will be a little bit stagnant only. And जैसे आप देख रहे हैं कि revenue जिस rate में grow हुआ है, उसी consistent rate में the EBITDA has also grown and the PAT has also grown. The EBITDA we have managed to keep it healthy around 18 to 19%, and the PAT margins have been increased, expanded from 9% to 13%, and has settled to 12.7% in financial year 25-26. Okay, sir, got it. So, sir, I think if you can really move towards this investment rationale, okay, I think this is your brief about what exactly the company has unique about it. So, if you can take us the financial, your investment rationale and growth strategy going forward, so that would be helpful. Yes. So see, I'd like to say that at Kwick Forensic Solutions, हम सिर्फ product नहीं बेचते हैं. So basically, what we do is we provide solutions to our customer. आप देखोगे तो we have around 20 years of domain expertise in this particular sector, and we have gained experience from our ground staff जो आके कस्टमर के साथ बैठ के प्रॉब्लम समझते हैं and their forensic requirements समझते हैं, and based on that we have made good connects with the global OEMs, and we get the good information about the products, and also ये products and ये जो technology है
we create awareness among our customers जो हमको क्रॉस सेल कर जो हमको वापस रिपीट ऑर्डर्स देते हैं. So I would say कि the investment rationale would be we have good deep relationships with the government and the law enforcement clients, and at the same time we have good relationships with OEM. And coming to the the barrier, there is a high entry barrier. आप ना बहुत कम कंपनी सुने होंगे जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में है. इन लिस्टेड एंटिटीज में तो कोई भी है नहीं as far as I know. And entering into this segment is very difficult. The reason being, see, I would associate this sector closely to defense sector, जहाँ पे government usually prefers the government department usually prefer the trusted vendors. And the reason being is very simple. हमारा जो forensic sector है, जो हम equipments जो हम supply करते हैं, this directly affects the public safety. बिकॉज अगर इक्विपमेंट्स में कुछ इशू है या क्वालिटी अच्छा नहीं है तो द रिजल्ट्स विल ड्रॉप एंड द जजमेंट विल गो रॉन्ग. दैट्स द रीजन क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ रेप्यूटेड वेंडर से ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट परचेज करेंगे. Coming to the growth strategy, I would like to say that this sector is emerging. अभी तक this has not fully developed yet. It is still developing, and I would like to highlight that our Home Minister Amit Shah ji ने बोला है कि around 30,000 crores has been allocated for next 5 financial year. This shows ki how the existing government is focused on this particular sector, as it is very important to reduce the backlog of the cases that are pending at the court, and also to give faster reports of the evidences, which will effectively help them to reduce the court pendencies. Okay, sir. ओके सर, आई थिंक काफ़ी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दी आपने बिजनेस की एंड अबाउट योर ग्रोथ स्ट्रेटजीज. अबाउट कंपनी इज दैट they have the integrated solutions which is across the 13 verticals of the forensics they operate into, and this industry obviously has a very high entry barrier, and so that is the one. There are two growth triggers for the company: is scaling their mobile van business and the e-forensic solutions, which is yet to scale up, and the software is already being underdeveloped. But the company already has shown uh, the proven expertise in developing multiple softwares for their respective product lines. So that is about the company, and I thank the management for the giving us the opportunity to host you and giving us your time to explain the business. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you so much for giving us time and opportunity. Thank you.